What do you think about the fashion industry in India today? जैसे तुम लोग खुद भी बोल रहे हो कि 2020 में बूम आया. We were also in very kind of rush. ये करना है, वो करना है, ये करना है, सेल्स बढ़ानी है, ये करना है, डिजाइन्स निकालने हैं, ये करना है. लेकिन we somehow forgot that part which we think it's very important for. कि सर वो अपने फर्स्ट को जो पार्सल भेजे थे ना, उसमें वेट डिफरेंस का इतना इशू था, तो ये पैसे कट गए. What amount of funds are required अगर किसी को बेसिक शुरू करना है, जैसे तुम लोग ने अगर शुरू किया 35,000. आई थिंक बहुत ट्रिकी बिजनेस है ये. To hire a team to understand कि what are the requirements. How did you guys come up with the name Wabi Sabi? Wabi Sabi, I told you. You guys like sushi, no? Reels इतने सारे निकलते रहते हैं, वो printing business, t-shirt पे printing करवाओ क्या, easy money ये business. What do you guys think about that? मतलब ब्रांड्स को समझ में नहीं आता कि इस पार्सल को कैसे चार्जेस करने हैं, इसके SMS चार्जेस क्या है, इसके WhatsApp चार्जेस क्या है. मतलब इट्स जस्ट अ बिग स्कैम. अभी नया ही कोई एक ब्रांड है and it has like denim वाला, सारी चीजें denim की है. मतलब वो उल्टा कपड़ा हो करके आया हुआ था. और एनी ई-कॉमर्स बैकग्राउंड आरटीओ इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज. इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स डरते हैं COD करने से, वो करने से. What do you think about the fashion industry in India today? Like जैसे तुम लोग खुद भी बोल रहे हो कि 2020 में बूम आया, मतलब सब लोग ऐसे स्टैग्नेंट हो गए थे. Everybody came with an idea and did so many things. मतलब अभी क्या लग रहा है? What stage are we in? Where is the fashion industry going? If you can talk about online, offline, anything that you want. Fashion industry is going to rise forever now. Because if India is developing and booming, then fashion has to boom simultaneously. Right. India will go more into foreign affairs. India will go more into social media. Fashion will go simultaneously with it. It totally depends upon the person opening the brand. मतलब it involves a lot of unit economics in fashion. मतलब बहुत ज़्यादा core तक unit economics होती है जो इंसान क्रैक कर ही नहीं पाता. It takes around 2 to 3 years to crack it. अगर कोई भी पर्सन जैसे फैशन ब्रांड खोल रहा है, if he can control the unit economics, ही होल्ड करके चले कि भाई मार्केटिंग स्पेंड इतना रेशियो, सप्लाई चेन इतना रेशियो, फिक्स एसेट्स इतना रेशियो, सैलरीज इतना रेशियो, तो फैशन इंडस्ट्री कंट्रोल हो सकता है. वरना इट इज अनकंट्रोलेबल. अगर किसी ने यूनिट इकोनॉमिक्स कंट्रोल नहीं किया तो नहीं चला पाएगा. Because basically a product which have like we give 9 sizes, right? But there are also brands who do 4 to 5 sizes also. But still, if you want to like do a product like fashion, something in fashion which have sizes, it's tough because you have that much of sizes to deal with it. If you want to keep one style and you want to keep inventory of that, you have like us. Like if I launch a product, if I want to keep inventory of all of this, then I have to like basically make 100, 200, 300 in each size to basically be available for the product. हर जगह मार्जिन बढ़ते गया तुम्हारा फिर. So that takes a lot of fun to in fact to rotate if you want to really come up with. So how did you guys manage that? So So we did it यार slowly and steadily. मतलब मेरे को धीरे-धीरे bootstrap करते गए, धीरे-धीरे पैसे. We tried everything. मतलब we were keeping to inventory, to made to order, to keeping list of inventory and keeping what's not important to keep in inventory, what we can do, fast moving products. It's just mixed. It's not something particular that we do ki acha there is a inventory based model, then we'll do inventory even if it's making us fixed loss. strategy नहीं है इस चीज के लिए, ये बोल रहे हो यार. It's a course of journey, समझ रहे हो? ये इसकी फिक्स स्ट्रेटजी हो ही नहीं सकती है. जैसे गाड़ी है, लेट्स से वी आर लर्निंग टू ड्राइव अ कार, इट कैन नेवर बी अ फिक्स स्ट्रेटजी कि आपको गियर ऐसे लगानी है, आपको ये करना है. व्हेन यू विल गो स्टार्ट ड्राइविंग इट, व्हेन यू विल टेक अ लेफ्ट टर्न, व्हेन यू गो इनटू जैम्स, व्हेन यू विल टेक give extra brakes, when you take it to the highway, then only you will learn कि इसको एक्चुअल में चलाना कैसे है. It's like that only. Fashion or any industry is just like that. मतलब इन्वेंट्री मैनेज करना मुश्किल तो है बहुत. मतलब बेसिक ऑब्स्टिकल तो आई थिंक, मतलब तुम कपड़े बना लो बहुत, main you can say बहुत. और हमारे लिए तो बहुत ही ज्यादा, बिकॉज हम 9 साइजेस कैटर करते हैं. मतलब इंडिया में रेयरली कोई ब्रांड्स ऐसे होते हैं 9 sizes. Can you please from XS to 5XL. Oh, 5XL. Yes. So we had a very clear idea. यार मेरे को प्रीमियम लेवल को अफोर्डेबल करना है और मेरे को इंडिया की एक वर्किंग वुमन को कैटर करना है. Wow. So a working woman starts from 23 or 24. So 23-24 से लेके 40 इयर्स तक एज में मेरे को एक इंसान को एक कपड़ा पहनाना ही है, तो इसलिए मेरे को 9 साइजेस लेने ही लेने हैं. तो because our age group belongs to that, so we don't want ki even if we are marketing that that kind of silhouette which is unique, also affordable, but we also want that every shapes and size could try. यार फैशन अफोर्डेबल है, फैशन अफोर्डेबल है तो सबके लिए होना चाहिए. मतलब ये नहीं कि कोई भी एक लेफ्ट बिहाइंड हो जाए.
But have you marketed it in that way? No. No. That is not our main USP. Okay. Like we did not yet highlighted and marketed the way it has to be. Yeah. That we do like 9 sizes, but it's not something like that. It's not something that you want to highlight also. I think it's just It's basic. just fashion. Yeah. हाँ. Basic. मतलब for us, It should fashion be is like this. It should be casual for Yeah. every each and Yeah. every But it brand. should be there. It's so basic Yeah, that it it's should be there. it's the bare minimum every brand should do. Yeah. So उसको market करने का कोई point ही नहीं बनता है. What we'll market is कि the products we are providing and the price we are providing. Right. So, like as we discussed, one of the challenges, तुम लोगों को क्या-क्या challenges आए, मतलब थोड़ा अगर तुम बता सको, somebody who wants to start a clothing brand today, जैसे तुमने अपने basic बताया कि भाई curiosity तो थी तुम दोनों में कि भाई करना है, you've decided on this project कि भाई करेंगे, वीडियो कॉल्स पे कर रहे हैं बात, लेकिन we'll crack this out, we'll try and test, marketing सीखी तुमने, Google Ads चलाना सीखा तुमने, like did everything from scratch. You had your background from fashion, but still इतना भी नहीं था तुम्हें experience that you could churn out something. It was also your passion that you did it, right? Exactly. But apart from this, what are the obstacles in the business level that you guys face? One of them was inventory issues. जो खुद ही, I think with experience you are saying that taper होगी. Yes. What else apart from this? यार और सबसे मेजर इशू है टू फाइंड द नीश ऑफ द प्रोडक्ट. हाँ यार. सबसे बेसिक वही है. मतलब Niche. आज कोई भी अपना काम स्टार्ट करने से सबसे पहले ये सोचता है कि किस कौन पे सी करना और niche? क्या करना है. और वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता तुरंत, सही बोल रही हो. क्योंकि आपने सोच लिया कि आपको ये करना है and everything gonna be this until you try hit and Yeah. it is not possible Try it to and run find वाला it. game. Exactly So what's सबसे working important- out for you and for your market. The most important part is the niche of the product, then the price of the product, right? Third most important part in every business is unit level economics. मतलब it is very very difficult to understand for But anybody. you are from finance background, so you maybe cracked it. What about people who are not from finance background? Will they be able to? But I was not from finance background, right? You said you were. No. I was, business Okay. yeah. Like not particularly finance, Okay. but he was not handling something related to finance, but he had a business mindset, not something related to finance or No, but you did your course in which? no, I was engineer, BTech background. अच्छा BTech background, okay. Introduction to मैंने finance सोच I told that I've handled the finances of the brand. अच्छा हाँ, so ठीक है, you were talking about obstacles. So most important obstacle I feel is unit level economics for any business. So what happens? No, that it takes. मतलब you start a thing, you start rising it, making it like a baby, and yes. So what happens that you never catch that part. कि आप उसको करते चले जाते हो. You start hiring people, you start running ads, you start making the and inventory. there's too much to handle. Yes. Right. Especially when in the start. Yeah. So you never able to handle it कि यार मैं 3,000 प्रोडक्ट बना रहा हूँ. I am spending 1,000 to 1,200 rupees on the ads. I am spending 800 to 1,000 rupees on the product. I am paying 200 300 rupees government the taxes. I'm paying fixed cost around 500 rupees. What I am getting is 100 rupees. ये इंसान को समझ में नहीं आ पाता. मतलब जितना लेट समझ में आता है कि उसको समझ में आता है कि अब करें क्योंकि क्या. ऐसा रोटेट होता पैसा तो अपने पास से ही फ्लो करता है. हाँ, सो डोंट रियली अंडरस्टैंड फॉर अ टाइम कि अच्छा हो क्या रहा है. व्हाट इज द रियल गेम. अब बिजनेस बुक्स बोलती हैं कि you do not have to take any money home till 3 years. It's absolutely right. You're not taking home. आप ले नहीं जा पाओगे क्योंकि बनेगा नहीं पैसा. Okay, so for 3 years you have to completely invest. So do you need to Your have mind, a body, capital? soul as well. Yeah, that's absolutely. But what about funding? Like, what amount of funds are required? अगर किसी को basic शुरू करना है, जैसे तुम लोग ने अगर शुरू किया, तो कितने फंड से हो जाएगा? Yeah, we started from 35,000 rupees. 35,000. Yes. So it's depend. Like it totally depends. If you, जैसे we started very impromptu. People who are now starting brand getting a lot of knowledge from YouTube, from podcasts like this, and a lot of things. So everybody have their own plans. But it's not like that कि there is certain amount कि इतने से ही हो सकता है या bootstrap बिल्कुल भी नहीं हो सकता या bootstrap ही हो सकता है. It's all depend on the founder, how you want to take it. You want to go slow, you want to go really fast, you want to put all in the very first. It's totally dependent. But is it safe to put all in at first? I would not say it's a safe thing. First you should try and figure out what. If you're very sure about the niche of the product, the pricing of the product, and the cogs of the product, then you can go all in. Or maybe you were in the industry before. हाँ, or you have already That made also such matters. brands earlier, or worked in such brands earlier, which so that you can have
prior knowledge to understand. तो possible है. तो तुम बोलो नीश डिफाइन करना थोड़ा सबसे पहला ऑब्स्टिकल है, एंड देन कम्स इन्वेंटरी मैनेजमेंट एंड Then comes the pricing. the pricing, and then the inventory thing. What apart from that, what are the next stages? Making a team. Making a team. I think that's true. I think finding the right team is It takes time. It It takes takes a lot time to first to understand कि आपको क्या चाहिए. पहले तो आपको खुद ही समझ नहीं आता कि what do you want? What does this work want? How much amount of people do you want? yeah. कभी कभी शुरुआत में मुझे ऐसा लगता था कि आई नीड लॉट ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ पीपल टू डू ऑल दिस वर्क, एंड समटाइम्स इट फील्स लाइक नो, दिस कुड बी डन विद वन आइडियल पर्सन फॉर दैट. सो इट that is the thing, like teamwork is something also, like team मतलब making a सही team. टीम भी मिलना मुश्किल भी है, या आप लोग को इजीली मिल गई थी टीम? नहीं, बहुत मुश्किल है. मुश्किल है. बहुत मुश्किल बहुत मुश्किल You है. have to try a lot of people. Actually, analyze the perfect opening. मतलब you being the founder, you also don't know कि what is the perfect opening in your brand. So you hire people, you place them on the opening, then you make them work for 4-5 months in that opening. Then you'll understand कि नहीं यार, अब तो इस ओपनिंग की जरूरत ही नहीं है. फॉर एग्जाम्पल लाइक, तो थ्रू द कोर्स ऑफ जर्नी आपको मिलती है वैसी टीम, और फिर आपको अपनी परफेक्ट ओपनिंग्स मिल जाती हैं. बहुत ही आई थिंक बहुत ट्रिकी बिजनेस है ये, टू हायर अ टीम, टू अंडरस्टैंड कि व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स. बट आई थिंक यू गाइस हैव बीन लकी इन फाइंडिंग योरसेल्व्स एटलीस्ट. आई मीन From day one. या बिकॉज आई फील कि यार मतलब दोनों का इनपुट बहुत स्ट्रांगली है. मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे फाउंडर्स को they're doing the same kind of a task and then hiring for other things, right? But I feel that you guys are managing two different aspects of the brand, and I think that helpful also. I think clashes नहीं होते होंगे. No, I don't say in any of it decision making. Yeah. He doesn't say in mine. That's a clear fact that ये day one से है कि आप इधर मत बोलो और मैं उधर नहीं बोलूं कि it's not something like, of course if I want suggestion in you know some kind of designs or something, I obviously the first person I have to go is him only. He suggests me, but he don't put a barrier कि you can't do this or this has to be done in that way. It is totally my decision that how I want to go. And similarly at his part as well. And I think everybody is good at their own things. I feel कि designing अगर हर्षद से करवाने लगे तो फिर Exactly. how did you guys come up with the name Wabi Sabi? Wabi Sabi, I told you. Like, you guys like sushi, no? like we love it. It's just not about liking. We love it. Sushi have wasabi. Oh, sorry. Everybody gets confused in this. Like wasabi is something and Wabi wabi Sabi sabi is is some different. Japanese Yes. Theory, yes. Theory, हाँ. It's about finding beauty in imperfection. Oh. So basically, we thought we two are imperfect duo to make something out of nothing. Yeah. So we thought this is a good name to it, and we feel that he is Wabi and I am Sabi. Oh, like that's we so complete nice. each other in different kind of ways. So that's why we took that. And there is also one more logic behind keeping our brand name Wabi Sabi is like it's rhythmic, it's catchy. हाँ, it is. So first when you're starting up, so if you put your brand name which is like very hard to pronunciate, people might forgot कि अच्छा क्या था उस ब्रांड का नाम. वाबी साबी समथिंग कोई एक बार सुन लेगा तो उसको याद जरूर है. तो रहेगा. Memorable, yes. So that's also reason why और we put. शॉर्ट भी है ना, मतलब वाबी साबी, it's rhythmic, rhyme, it's it's catchy. catchy, it's 4 words, सारे टिक टिक टिक. भाई कैसे ढूंढ लिया तुम लोग ने नाम? And उस time domain and all was available. Yeah. Lucky. I don't think so you can find enough domains today. After we launched and it's been like almost 4 years. अब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांड्स, अदर ब्रांड्स Many people have started वाबी साबी using- हो गए हैं, बट वाबी साबी फिर से? हाँ, मतलब like they are maybe not putting in up the, some maybe other not in a name. category, maybe not in fashion. Maybe they are doing something others. अच्छा, मतलब अच्छा. some brands are doing some bedsheet kind of thing. Yeah, Okay, yeah. okay. There is a restaurant also. So that is the thing. तो ये हमारे रखने के बाद से काफी ज्यादा वो और मार्केट में पॉपुलर हो गया है ये नाम वाबी साबी. इट्स अ क्यूट नेम बाय द वे. Yeah, it is a cute name. वैसे let's come to some harsh questions now. I don't know whether you guys will answer it or not. Like, do you guys consider anybody your competitors today in the online market? There's no such competition in this market actually. मतलब people have to work together. There are a lot of brands, but not as competitors. I get inspired from them, like what they do. They, of course, like if I'm doing something right, there are other brands who are doing better.
Yeah, so that's why I don't feel anybody as a competitor, and I will not say on the camera as well. Yes, but नहीं, वैसे you guys I are get right. inspired from other brands. Like I see, like I do, if I have a time, like at least 1 hour in a day, I like to do like Go through. search, go through what other brands. I think are that's doing taking better with. inspiration. Yeah. So it's about learning from them. Yeah. Well, we have also built something, they have also built something. So it's like we are mutually learning from each other. So I also like digging into some other brands, analyze what their revenues are, what their ad spends are. So it gives me more insights about things. And I think you always have to be on up your game to understand also कि market में चल क्या रहा है ना, मतलब कि competitors क्या कर रहे हैं वो तो knowledge होनी ही चाहिए. But still, like as you also said, I think you were saying कि fashion में competition नहीं हो सकता because I think there's room for a lot of Yes. A lot of things. Yeah. है ना, there's space for a lot of things. But अभी किस चीज Especially को when you have your own niche. Like we have a different kind of niche. हाँ. I feel there are some brands who are doing something like us as well, but there are less. But if you go in the area where something is very common like t-shirts, so there it is like a very kind of a big competition because there is a lot of new people who are doing ये रील्स इतने सारे निकलते रहते हैं वो प्रिंटिंग बिजनेस टी शर्ट पे प्रिंटिंग करवाओ क्या इजी मनी ये बिजनेस व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दैट मतलब It's not, nothing is easy money. If you start, if I have even thought of having a business, it can never be easy money. Easy money is something else, you know. नहीं मतलब बट अभी किस नीश में टेपर किया जा सकता है इफ यू गाइस कैन गिव Niche में taper किया जा सकता है as in for fashion thing? फैशन ओनली लाइक अगर अभी किसी स्कूल या किसी स्टूडेंट को जो कॉलेज में है उसको भी कुछ ऐसा स्टार्ट करना है Yeah, someone should get into men's fashion now. मेंस फैशन Men's, like, I really want to do men's. हाँ. We are thinking of it, हाँ. but I believe similarly, like we have a brand as Wabi Sabi. I feel again कोई men's का ऐसा brand है जो थोड़ा unique styles भी कर रहा है, then again it's very hefty priced. So I think something that we do, like different kind of designing, different kind of silhouettes. In the same pricing, I would say if somebody can do, it will be a good, nice catch for anyone to Okay. like. Any other niche that you would want to define? Apart from like she already said like men fashion, you said men clothing के ऊपर अगर कुछ something वो बोल रही है luxury in men fashion, right? और कुछ ऐसे Affordable in men's fashion. हाँ मतलब sorry affordable luxury in men fashion. Apart from that अगर कोई और अभी शुरू करना चाहे तुम्हें क्या लगता है और क्या गैप है अभी फैशन इंडस्ट्री में जो I mean nobody is gonna take anything from Wabi Sabi. Relax. You guys will always, because I feel there's always an advantage of starting something early. So you guys will always have an advantage of Yes, starting yes. something earlier. Like I personally like accessories brands also. Like it's a good work. I think It's different from our niche, of course. It's just different. But I think it's easy. Easy because you don't have to keep sizes. So first of all, तो जो main obstacle एक fashion brand का है that 9 sizes or maybe 4 or maybe 5 to get around with the inventory and be fumbled in that. Yeah. Accessory is a good thing because you can do good designing also. Jewelry में भी ऐसा है कि designing जो लोग कर रहे हैं again it's very hefty prices. Something around same pricing but unique styles if anybody can give. That is a very good part, I think. Anybody can do. बट यार एक ये भी चीज होती है ना कि बहुत सारे लोग फाइनेंशियली दे डोंट हैव द सपोर्ट टू स्टार्ट एंड गेट इनटू इट थॉरली तो ठीक है मतलब ऐसा भी नहीं है आई थिंक पीपल कैन मैनेज जॉब एंड बिजनेस इफ दे आर पैशनेट इनफ Passionate and hardworking. हार्ड वर्किंग पैशनेट तो एक वो पॉइंट हो गया मेरे को लगता है जॉब के साथ करना क्योंकि एक आप इधर मोटिवेटेड हो जहां आप किसी और के लिए काम कर रहे हो मतलब you have to be 2 person in one. एक जो किसी और के लिए कर रहा है एक जो अपने लिए कर रहा है वो टफ है मैनेज और पैशन बिना यार पैशन के बहुत क्योंकि 12 घंटे तो हाँ जाते हैं पैशन का भी बहुत अलग डेफिनेशन है आई डोंट अंडरस्टैंड कि पीपल कहते हैं मेरे को चीज का पैशन है वो पैशन है पैशन बोलने से नहीं हो सकता करने से होता है। हाँ जब तक यू डोंट गेट इनटू इट 6 महीना मैं 6 महीने के बाद आप बोलोगे इस चीज का पैशन है मैं मान जाऊँ पैशन है तुम बोलोगे मेरे को इस चीज का पैशन है तो कोई पैशन है ही नहीं ऐसा सही बात जस्ट अ थॉट इन योर माइंड जब तक एग्जीक्यूशन नहीं है तब तक कहाँ हाँ, से आप 4 अब मंथ्स में एग्जीक्यूट करके पता लगा या तो मजा ही नहीं आ रहा घिसना पड़ रहा है वो वाला नहीं तो वो होता पैशन नहीं बचा अगर आप एट द एंड ऑफ योर लाइफ
Yeah. उस वर्ड को बोलते रहो मेरे को चीज का पैशन है तो ही पैशन है, हाँ, तो वो लोगों में नहीं होता है। ठीक है. Let's start with that. Like, I wanted you guys to tell somebody who wants to start their clothing brand from scratch क्या क्या चीजें हैं जो करनी है to the point to sell it in the market. तो ऐसे step करके अगर समझा सकते हो तो it will be easy for a person who is watching it. I think Harshad will better do that. हाँ, you आप can ही give समझाओ. your inputs in between. Like starting से अगर Yeah, let's say you have decided the niche, you have decided the pricing point, right? After that comes the brand and the logo वाला part, कि आप अपना brand name क्या रखोगे, आप उसका logo क्या रखोगे, वो आपने design कर लिया. ठीक है. Then depends upon that you're selling it online or offline. If you're selling it online, it comes the domain वाला part. If you want to sell it on website or you want to just sell on social media. अगर आप if you are planning to sell it on website, then you have to buy the domain name. Then you have to decide कि on which platform you have to make the website. Whether it's Wix for small scale brands. Then comes Shopify and then comes self-coded websites, Right. which is not required in marketing. हाँ, in this beginning I don't think so it's required. Right. So you have designed the logo, you have decided the brand name, you have done the domain wala part, you have done the website wala part. Then comes the shoot and graphic designing of your brand. Yeah. You have to start building up your social media. You have to start gaining By followers the time into you're it. doing all that, there Most should be important part something, which people don't do right now is you have to start building up community across it. Okay. From the first day of your brand, if you have a clear vision कि मेरे को ये brand ऐसा बनाना है, तो उसकी community आपकी बननी चाहिए from the first day. So you're saying social media accounts should be active? No, That's community means maybe you pick a problem, maybe you pick a solution, maybe you know do something where you are justifying your brand with and relating it to something, and you make a community where people can relate to your content, But which how? we also lacked. Like, But in how? Which we Where are you also doing it? Like, where are you going to do it? like you can make a channel. It totally Maybe depends. For example, I'll tell you which you can we upload lacked. a few posts, a few series, something like that, which basically pushes it to Community you are is just not saying most something. importantly just on social media. आप social media build कर रहे हो, you're gaining followers into it. Let's say वाबिस आप एक niche है party wear brands. So from the first day, we should be catering different parties physically. got We should be getting into kitty parties, explaining those women कि what we are. Right. तो तो मोर अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई कर लेना है डे 1 से. Right, वो आपने कर लिया और उसकी कम्युनिटी आपको धीरे धीरे करके बिल्ड करनी जानी है. Got it. At a scale, when you reach, that community will help you in Yeah. getting the Organic. revenue without any Organic. ad spends. That's organic. That will be your net profit in that. I think that's a great insight. Yes, so that needs to be done from the first day. आप revenue बहुत ज़्यादा मत करो, आप थोड़ा थोड़ा करके बढ़ो, but वो community हमेशा strong hold होनी चाहिए. You should be a part of that. Okay. You have built your social media, you have built your community, you have done your graphic design, you have Even if started. you're in our time of life, we were also in very kind of rush. ये Rush. करना है, वो करना है, ये करना है, sales बढ़ानी है, ये करना है, designs निकालने हैं, ये करना है. लेकिन we somehow forgot that part, which we think it's very important for getting good ROAS. But I think your focus was always on कि Google ad कर लेंगे. Not Google, we do Meta. Meta ads. हाँ, मतलब completely meta ads कर लेंगे. That was your main So focus. that कि- was one directional thing. Yeah, because हमने कर again लिया, we started impromptu. That's why. हमने कर लिया, हमने यूनिट लेवल इकोनॉमिक्स होल्ड कर लिए, हमने एक स्केल रीच कर लिया तो हमने मार्जिन्स निकाल लिए. समझ रहे हो? इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि एवरी ब्रांड उस नीच में कर पाए. मे बी हमें देख के बहुत सारे ब्रांड स्टार्ट हो, सेम कैटेगरी में आए, एवरीथिंग इज ओके, मतलब आई अप्रिशिएट एवरीथिंग, बट अगर वो कम्युनिटी बिल्ड कर लेंगे तो मे बी दे कैन बीट वाबिसा भी ऑल्सो इन दैट. Right, right. Apart from that, फिर हो गया community build करना है. कम्युनिटी बिल्ड हो गई, सोशल मीडिया हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग देयर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, दे हैव स्टार्टेड रनिंग मेटा एड्स थ्रू इट स्लोली एंड स्टडी. दे अब व्हाट हैपेंस नो, बहुत सारे ब्रांड्स लेट्स से दे आर वेरी गुड फ्रॉम फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स, दे हैव गुड फाइनेंशियल होल्डिंग, मे बी दे हैव डन jobs for 4-5 years, they have done a lot of saving and then they get into business. So उसमें भी क्या होता है ना कि they believe कि यार मैं अपनी supply chain पहले से strong कर लूं. It is not required actually. अच्छा. What requires is कि आप अपने मार्केट को पहले मार्केट में कैसे टेस्ट कर रहे हो. Okay. मे बी आपने 20 प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, उसमें से 2 ही प्रोडक्ट चलेंगे आपके. एंड दिस हैज टू बी अ फैक्ट. And that other 18 products is going to be like, what are you going to do? Sale में निकालोगे आप? What you तो can do? आपको 2 प्रोडक्ट भर के एकदम सेल देगा, लेकिन जो 18 प्रोडक्ट है ना आपको डिमोटिवेट करेगा. तो फिर यही तो प्लान करना पड़ेगा ना फिर.
तो दैट रिक्वायर्स डेटा एनालिसिस जो ब्रांड्स फर्स्ट स्टार्टिंग में नहीं कर नहीं कर पाते पाएंगे। तो इसलिए दे हैव टू स्टार्ट वेरी स्मॉल Small. यू हैव अ गुड अमाउंट ऑफ कैपिटल अप्रिशिएट इट बट आप उसका 10% कैपिटल लेके मार्केट में उतरो थोड़ा सा ट्राई करो फिर थोड़ा सा डालो आप जो कैपिटल फर्स्ट डे पे पूरा स्पेंड करने की कोशिश कर रहे थे आप उसको 2 मंथ्स में स्पेंड कर दो बट वो 2 मंथ्स आपको ना एकदम थोड़ी सी डेटा एनालिसिस दे देगा अपने ब्रांड की कि what is working for you and for your market. then you'll be able to understand more better कि मेरा ये प्रोडक्ट ऐसा चलता है और ये साइजेस चलते ये हैं हाँ। फिर आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तब आप उन 2 प्रोडक्ट्स की इन्वेंटरी ज्यादा बनाओगे दूसरे ही कम करोगे तो वो धीरे धीरे करके बिल्ड होगा Okay. And is this the final stage of? हाँ सप्लाई चेन अगर आपने स्ट्रॉन्ग कंट्रोल कर ली एंड देन यू कैन रन द एड्स देन डन Run the Then ads? creating content is the main game right now. वो तो करना ही करना है. हाँ. That is not even an option to left. हाँ, You have to you do have it. to do it. मतलब तुम चाहो भी तो मुझे एक चीज So और creating पूछनी थी। content involves a lot of collaborations. Yeah. Now what happens? No, I'll tell you a situation. When a brand starts new, मतलब इंसान को लगता है ना कि मैं फ्री में कपड़े क्यों दूं? Let's say you are doing barters, but you don't understand कि let's say आपके पास 100 प्रोडक्ट है और 10 प्रोडक्ट आप फ्री में दे रहे हो तो आप 90 प्रोडक्ट की सेल ला रहे हो Right. ये लोग नहीं समझ पाते मतलब इट इज अ वेरी बिग इशू इन दिस मार्केट Okay. मतलब brands do not give products. when you start the new people no who are starting off. they do not उसके have बाद an उनके idea पास खुद ऑप्शन नहीं बनता है they do not have ये an- आपको देना ही पड़ेगा. they do not have an idea कि उस साइड पे क्या है तो उनको वो जो अमाउंट है उसको रिलीज करना ही करना है देयर इज नो ऑप्शन 10% 20% ऑफ It's a योर healthy thing you have to do. initial supply chain has to go into barters and collaborations हाँ मतलब I think that's how you promote and I think आजकल influencer marketing is one of the things that you have very, to touch. very important And even if you're doing your ads also through meta influencer marketing is very very important important and especially I think for clothing brands Yes. you have to do it. Any brand. Skincare also, clothing as well. Skincare, clothing क्योंकि No, जब तक even आप पहने भी नहीं दिखते हो. Problem brands solving also, products. they require influencer collaboration a lot हाँ, I think that is effective on those That products. creates basically awareness, which is very important. You are selling a product on your page, then only the people Will who know or follow you Or get maybe to know whom what you you're are selling. targeting maybe. And it Yeah, is not when just you effective, collaborate it is with not- other people, their audience get to know. हाँ. Okay, this something like this Right. exists. Right. So it's very important to at least be visible in the market. And what does it cost for a brand? Just the product. I mean, there are brands, there are people who are doing influencer with good budgets. So it is a very big thing कि मतलब आप शुरुआत में तो आप पेड कर ही नहीं सकते क्योंकि आपकी इतनी होती नहीं है इतना बजट नहीं होता कि आप कर आपकी इतनी सको. औकात नहीं होती. हाँ एग्जैक्टली आप नहीं होती है कि आप कर सको वो चीज बट लीस्ट यू कैन डू टू एटलीस्ट गिव इवन टू लाइक अदर बिग इन्फ्लुएंसर्स जो ऑफ कोर्स विल नॉट बी एबल टू यू नो Yeah. दे हैव लॉट ऑफ वर्क टू डू Right. सो एटलीस्ट approach the people who are also starting off their content journey so you can also give them product on barter they'll give you good content UGC content So what will happen? No, there also you'll start building a community. The bloggers who are starting new, Right. you'll start working Right. together, and you both will grow together. No, they will also help They at that also- point of time. Right. I think collaboration is everywhere. Everywhere. I have like 2 questions coming into my mind. Influencer वाली चीज मैं थोड़ा टाइम के बाद टेबल करूंगी. आपने पूरा प्रोसेस बताया हर्षद कि कैसे कैसे मतलब व्हाट आर द बेसिक थिंग्स दैट यू नीड टू डू. मेरे को वो चीज़ जाननी है कि चलो इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है वो ठीक है मैंने इन्वेंट्री मैनेज कर ली गूगल एड्स पे कितने स्पेंड करने सब कुछ मैनेज हो गया. अब जैसे ये जो डिलीवरी चार्जेस होते हैं जो रिटर्न पासेस होते हैं हाउ डू यू मतलब कैसे उसको कैसे देखना होता है and उसमें क्या चैलेंजेस हैं क्योंकि मुझे लगता है उसमें काफी Yeah, चैलेंजेस there's a होंगे. big loophole in that. Very big loophole in that. So the companies who are sitting at the top handling your delivery things, they मतलब I don't want to say that मतलब Maybe settle it down but say हाँ, it. they pick up the brands and they just misuse of them. मतलब ब्रांड्स को समझ में नहीं आता कि इस पार्सल को कैसे चार्जेस करने हैं इसके SMS चार्जेस क्या है इसके WhatsApp चार्जेस क्या है मतलब इट्स जस्ट अ बिग स्कैम एक्चुअली. Sorry, I didn't get it though. Like if you can elaborate a little without मतलब तो बंद कर दो फिर.
charging whatever they want. It is a very big So scam, they're actually. charging whatever they want to. So basically, there are too much hidden charges, just like credit cards. You know, Okay. you get to know कि अच्छा, you're getting a lot of things out of it, but suddenly you don't realize क्योंकि आप वैसे भी काम में बहुत ज्यादा बिजी रहते हो दूसरे अदर एक्टिविटीज में आपको पता तो चल लिया। आपको लगता है कि ये जो डिलीवरी वाला काम है ये बहुत एक बिल बहुत बड़ा बहुत इजी यार, मैं लैपटॉप बैठूंगा बिल निकालूंगा लड़का आके लेके जाएगा, बट यू डोंट नो दैट यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी इनटू इट. So जैसे थर्ड पार्टी डिलीवरी वो जो Aggregators होते जितने हैं हैं। एग्रीगेटर्स जितने होते हैं सब कर रहे हैं ये. सो बेसिकली आप यू नो दैट्स 1 kg बट आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो आपको किस तरीके से पैक करना चाहिए कि वो Okay. ज्यादा केजीज में काउंट ना हो रहा. दिस इज नॉट समथिंग दैट अदर ब्रांड्स आर रिस्पॉन्सिबल. दिस इज अबाउट वी आर बिकॉज वी आर लेस नॉलेज अबाउट दैट हाउ टू डू इट And nobody is giving out the information. इंफॉर्मेशन. एंड व्हाट हैपेंस दैट आपको लगता है यार ये तो बहुत इजी है कि मेरे को किसी एग्रीगेटर ने Tie-up कर लिया मैंने और उसको लॉगिन आईडी पासवर्ड दे दिया, मैं सारे बिल्स एक साथ निकालूंगा, वो आएगा सारे लेके चला जाएगा. मैं कुछ नहीं करूंगा, मेरे जो सीओडी के पैसे आएंगे वो उससे सेटल करके अपना कर देगा. अब क्या होगा, मंथली आपने लेट्स से 300 शिपमेंट्स भेज दिए, तो मंथली एंड जब मंथ एंड खत्म होगा आप एनालिसिस करने बैठोगे ना कि उस सीओडी से मेरे को इतने पैसे मिले थे, काट के इसने चले गए, आपका फाइनेंशियली इतना दिमाग ही स्ट्रांग नहीं होगा आप उसको क्रैक कर पाओगे बीच में लूप होल क्या है. तो देयर विल ऑलवेज बी अ लूप होल. इट इज अब easiest you way- can barely find out easiest in way- your first हाँ. Is it like 3 those years. kind of scams that are going around Zepto also, like वो जो आजकल जो scam, it's charges about वार्जेस your सभी लोग self- कर It रहे is हैं. not about Less scam, it is about self-knowledge. self knowledge. self knowledge. सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ एनालिसिस, उसमें बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस लगती है, लोग कर नहीं पाते. So So लगता how है much यार have you cracked it till now? A lot. Took time. It took time to understand took where is time the and money took, going. took lakhs of money. Lakhs of money Lakhs to and like, lakhs yeah. of money. It took time. Because it is something कि ये तो बहुत मतलब नेचुरली चलता है. ये वाला जो डिपार्टमेंट है ऑटोमेटेड है. Automated आएगा लगता है, जाके लेके चला जाएगा, Aggregators पैसे क्या कर आएंगे रहे हैं ना, वैसा वाला. aggregators क्या कर रहे हैं ना, they do not charge you anything for the delivery. Anything. What they do is कि आप सीओडी में पार्सल भेज रहे हो, मैं कस्टमर को भेजूंगा, कस्टमर को डिलीवर होगा, मैं उससे पैसे लेके मेरा जो पैसा मैं रख लूंगा, पैसा आपको दे दूंगा बाकी. राइट. तो लेट्स से कि आप उसका पैसा बनता है 50 रुपीज. ठीक है. When you'll sit across the month, you'll analyze कि उसने 80 रुपए काट रखे होंगे. अब आप उससे क्लेम भी नहीं कर पाओगे. रीजन में दिस कि उसको बोलेगा कि सर वो अपने फर्स्ट को जो पार्सल भेजे थे ना उसमें वेट डिफरेंस का इतना इशू था तो ये पैसे कट गए. क्योंकि आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं है कि क्या उस पैकेट में वेट डिफरेंस था. अब क्योंकि यू कांट weight difference के लिए- बेसिकली टेक अ पिक्चर ऑफ एवरी अदर पार्सल. नहीं नहीं, पिक्चर वोंट But हेल्प. maybe आप ये कर सकते हो कि अपनी पैकेजिंग को आप थोड़ा वेट हु विल एक्सप्लेन दैट. और क्या व्हाट हैपेंस ना कि जो वेट डिफरेंस वाला होता है इट रिक्वायर्स सम लेजर मशीन्स. अच्छा. तो विच आर प्लेस्ड ऑन द एयरपोर्ट. तो वो मशीन के अंदर कोई पार्सल जाता है और वो ऑटोमेटिक फीड होकर उनके सिस्टम पे आ जाता है. तो कहता है सर हमारे हाथ में नहीं है ये रिपोर्ट और ये वेट डिफरेंस था. Okay. So every month you will pay approximately 30 to 40% of money extra to them. Extra. According to your calculation. So it's उसके not like बाद भी- that कि उनकी गलती है. हमारे एम्प्लॉइज की पैकेजिंग के इशू हो सकते हैं या हमने हेवियर जीएसएम ऑफ पैकेजिंग यूज कर ली. कुड बी एनीथिंग. या हमारे बाद- पैकेजिंग के मैट्रिक्स इस तरीके से नहीं थे कि वो उधर काउंट हो गया. तो दिस कुड बी So कहीं ना कहीं अपनी इंटरनल पैकेजिंग को हल्का रखना जरूरी है. Is what you guys also say? Less dimensional. So there's a formula to it. Okay. The length, the width and the height को आप मल्टीप्लाई करते हो 5000 से डिवाइड करते हो तो दैट इज द वेट ऑफ द मटेरियल. Okay. लेट्स से कि आपका एक आईफोन है. आईफोन वेस्ट 200 ग्राम्स बट इट विल गो इनटू 1 kg. सो How is that happening? आईफोन का बॉक्स इतना छोटा हुआ ना, हाँ. उसका रीजन यही था. वेट तो कम नहीं हुआ उससे. आईफोन इंटरनेशनल इंपोर्ट होता है तो उसका कोरियर चार्ज इतना ज्यादा था कि उनको बॉक्स छोटा करना पड़ा, वो अडेप्टर हटाना पड़ा. Oh. तो दैट इज अ Hey, फॉर्मूला टू that's इट. quite smart of you to say that, dude. How did you guys? मतलब I think experience के साथ सीखा होगा लैक्स ना ऑफ ये? मनी खोए तो आ गया यार. I think nobody talks about लूजिंग it. मनी गेट्स यू नॉलेज. so I'll explain you कि जो बहुत बड़ा गैप है ना होम फर्निशिंग प्रोडक्ट्स. द प्रोडक्ट्स आर वेरी स्मॉल बट आप Amazon को देखते हो बिग बिग पार्सल्स में देखता Why है. is that? सो जो ब्रांड्स Amazon पे बेच रहे हैं ना दे आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी. Okay. Amazon खुद का पार्सल Oh. Amazon खुद का पार्सल तो भेजता नहीं है. हाँ. Amazon पे ऑर्डर करते हैं, कोई ब्रांड सेल करता है. इतना सा प्रोडक्ट इतने बड़े बॉक्स में आता है ना तो दैट ब्रांड इज लूजिंग मनी, उसको नॉलेज ही नहीं है. Oh God. This is quite an informational thing that you're saying. मतलब I think nobody knows about this.
ठीक है, ये तो आपने बता दिया, बट व्हाट अबाउट कितना ज्यादा वो होता है, रिटर्न पार्सल्स कितने ज्यादा होते हैं, हाउ डू यू गाइस मतलब टेक केयर ऑफ दैट? आइडियल स्टैंडर्ड्स तो कुछ हैं और होते कुछ और हैं. टोटली डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर सेलिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, Okay. हाउ योर प्रोडक्ट इज मार्केटेबल. पहली बात. दूसरी चीज, एक्सेप्टेबल कितना आपका प्रोडक्ट, आप जो बना रहे हो रिलेटेबल है भी कि नहीं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है. दूसरा, कांस्टेंट फॉलो अप आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर RTOs and DTOs. A lot. He will tell you the exact proportion of what DTOs and RTOs are. ओके, तो यार एक आरटीओज में ना बहुत बड़ा इशू है, मतलब समझ लो आप, फॉर एनी ई कॉमर्स बैकग्राउंड आरटीओज इज वन ऑफ द मेजर इश्यूज. इसलिए बहुत सारे ब्रांड्स डरते हैं सीओडी करने से, वो करने से, राइट? बट देयर आर मेनी वेज टू क्रैक इट. मतलब आई रिमेंबर इट वाज 2023 नवंबर, वी वर सिटिंग एट 40 to 45% आरटीओ. दैट्स अ लॉट. Yes. So we cracked it. We did some data analysis. We hired more people into it. We started tracking every single parcel which is coming back. And it took us 1 year. We are sitting at 11% RTO. वाओ, So काफी नीचे गया. so market standard is 20 to 25%. In any e-commerce background, 20 to 25% RTO But has we to are be there. constantly working that because that percentage Involves matters a lot money. of in the revenue. So let's say you have done a revenue of approximately a CR in a month. What happens now after in the next month, first week, you analyze that you have already lost approximately 20-25 lakh rupees in which was RTOs. supposed to be your profit. And सबसे बड़ा इशू कब आता है ना, जब सीजन चेंज होते हैं इन फैशन बैकग्राउंड. It ये is तो very fast. So You know what fashion you're is. sitting in December, आपने सीजन एंड किया, you have done a sale of in approximately a CR. आप एकदम खुश रहोगे यार, न्यू ईयर आ गया, एकदम हमने इतनी सेल्स कर ली, इतना कर लिया, अब तो पैसे ही पैसे आएंगे, राइट? सो व्हाट हैपेंस ना कि जब जनवरी आएगा 25 to 30 लाख का माल आपके पास वापसी आके इंटरव्यू में पड़ा होगा, और तब आप उसका कुछ नहीं कर पाओगे. यू हैव टू वेट द नेक्स्ट ईयर Season is अगेन. gone. Or either put on sale, but if you see, like So it's that is January, the most if you go to important- the mall, Yeah, every each sale. shop is So 70, इसलिए 50% जनवरी में हर off. ब्रांड्स की That's सेल why. लगती है कि सारा दिसंबर जो सीजन चेंज का माल होता है ना, दे स्टार्ट पुटिंग ऑन सेल्स फ्रॉम 10th of January till 30th of January. या फिर इस चीज को कैसे टेपर किया है, मतलब ये तो बहुत बड़ा लॉस है यार ये. इसका भी तरीका है. सो व्हाट यू विल डू इज ना कि व्हेन यू सेट इनटू अक्टूबर एंड नवंबर, दिवाली अभी रिसेंटली खत्म हुई है, तो यू हैव टू स्टार्ट डिक्रीजिंग द पेस उसी टाइम पे. लोग क्या करते हैं ना कि जब सीजन चढ़ रहा होता है तो स्टार्ट इंक्रीजिंग द पेस एंड सप्लाई चेन बढ़ती चली जाती है. तो आपकी सप्लाई चेन का ग्राफ ऐसे करके ऐसे हो जाना चाहिए. तो दिस इज दिवाली. दिवाली के बाद आप जैसे अपनी सप्लाई चेन वैसे ही पहले कट करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको जनवरी में इतना सेल में माल बेचना नहीं पड़ेगा. या फिर अपने इन्वेंट्री को भी Again, वही supply chain what like- he is trying to tell कि लोग जब पेस आता है, तो of course पेस आ रहा है means People you have to keep the inventory to fast cover up. वो करते करते ना लोग नीचे नहीं आते हैं, नीचे नहीं आते हैं तो फिर वो जमा हो जाता है उस बहुत टाइम सारा. पेस पे कुछ समझ में नहीं That's आता what है he कि wanted जो हो रहा होता रहा ऐसे करके ऊपर चढ़ता जाएगा. स्टार्टिंग में तो दिक्कत आई होगी तुम लोगों को भी बहुत. बहुत सीजन समझने में ही इतनी प्रॉब्लम आई ना. Yeah. सीजन का ये बहुत ही requirement क्या ट्रिकी है यार, ये बहुत tricky फैशन बिजनेस में दिस इज वेरी ट्रिकी बिकॉज द सीजन very fast. चेंजेस, फैशन चेंजेस. But as soon as you learn it, मतलब it is heights and heights after that. And it also depends brand to brand as well. या It is not possible कि what is happening with me Yeah, can also can happen also with the happen. same Obviously. category or the brand. मतलब मे बी आज सीजन इज दिसंबर जनवरी, किसी Right. और ब्रांड के लिए कोई और होगा. इट्स अबाउट लर्निंग देयर मेट्रिक्स Own इनटू इट. strategy, right. yeah. बट दिस हैज टू हैपन इन फैशन. 12 months कैन नॉट गो फ्लैट. राइट Yeah. राइट. तो Ups वो and downs होंगे. हाँ, तो वो उनको अपना समझना होगा. बट दे हैव टू लर्न. सो वाबी साबी हैज रिटर्न ऑन एक्सचेंज, ऐसा पॉलिसी है या Yeah. फिर लाइक यू रिटर्न द मनी इनटू देयर वॉलेट? No, we don't actually refund the money in their like in the payment of cash and all, but we do have exchange and return policies. Okay. So what we do is if the customer want to exchange, we can also do exchange, and we have a zero free pickup. Like you don't have to pay even if you have ordered a wrong size or you have got a defective product. You can just have it done with zero cost. But other brands or maybe fewer brands, they cost you a minimal amount of Yeah, 99 yeah. or maybe 199 to pick up your product. But it's not with us. We do zero free pickup. Yeah. Okay. And we also have let's say a return. parcel is delivered to you. You have to just approach a customer care team within 48 hours of the delivery. Okay. And they'll arrange a pickup. They'll guide you for the product. If you want to exchange it with some other product, they'll also guide you with the sizes. If you want to exchange, also they'll what they'll do, they'll pick up the product back and they'll provide you the gift card of the same amount.
Oh. So we don't do refunds, but we do that. So that is the thing. मतलब I yeah. think that's viable And option. the point why people have problem कि why only 48 hours, like the reason I'll tell you, because this industry has gone so far about, like, if you say कि people keep the product, use it and then return it, so that is also something that we have faced earlier in that Okay. we had like 3-4 days of, like, you can keep the parcel, return within 3 days, 4 so days. what they do, they Yeah. wear it and then they wear don't it give and it they to you. return it. Oh, so and that then is return why it. we have shortened up the margin of, reporting a problem. So that has also come up, like it is a profitable way to do I think it that's a for very good initiative that you took, because that also kahin na kahin that also suffers hygiene, I feel. Yeah, Because it does. a lot of people try it and then I wouldn't want to wear it. of Like course. I am that kind of a person. So I think most of the people Your would be hygiene like also that. and brand value also. Let's say you have tried it and you have returned it back to me. Yeah. I'll get it washed and send it again. And the new customer will be able to judge it. कि यार, you have Yeah. sent us the You know used what? product. It happened with me. It actually happened with me. Should I take the brand's name or not? I don't know. Maybe. I don't want it to affect you guys, but अभी नया ही कोई एक brand है and it has like denim वाला सारी चीजें denim की है. So I ordered twice. मतलब एक बार exchange भी किया and then again मतलब वो उल्टा कपड़ा हो करके आया हुआ था. Like it was not even looking like it's newly made for me. It looked like it was used. But it was just of 1,000 rupees or 1,050 and then I was like कि अब रहने दो, अब return नहीं करती हूँ क्योंकि 2 बार गलत चीजें हैं. So I think people do that and brands are not taking care again, because of it a if lot. they are doing 1,000 वाला niche, उनके पास मास मीडिया है, वो थोड़ा क्वालिटी में वो फिर कॉम्प्रोमाइज हो जाता यार है उनके वहाँ पास पे. इतने मार्जिन्स भी नहीं है ना कि मार्जिन्स भी नहीं है फिर वो आपको ये पिकअप कर दें फिर ये सर्विस दें. They cannot cater Maybe, that. but मतलब on a customer level that's not course, something that. कस्टमर को क्या फर्क पड़ता है, आप 1,000 में बेचो तो आप वो तो क्योंकि आप मैं बेच अपना रहे हो value of ना. money दे रही अगर हूँ ना कस्टमर यार. ने 1 रुपए भी पे किया है तो उसको तो वो चाहिए. चाहिए. That's it. So Simple. I think customer point of view से exchange होना बहुत जरूरी है. Of course. है ना, क्योंकि नहीं तो फिर वो आपसे It's buy नहीं करेगा. walk-in thing ना, कि you just try it and then you buy it. नहीं, because Little Box does not have a return policy और वो लोग exchange भी बहुत मतलब उनका बहुत process बहुत contact करने में बहुत दिक्कत आती है, because I am a customer of them, like I tried. तो वो चीज आई थिंक नहीं होनी चाहिए. आई थिंक यू शुड ऑलवेज हैव अ कस्टमर सपोर्ट It's सिस्टम. always available, just not on Sundays, because I नहीं, feel not for my Wabi Sabi. I'm just talking as an overall. अगर कोई no, भी people अपना have problem with this also. क्या? Like we do not use bot right now. Like we earlier used to do. Right now we have stopped using bot because we feel a human connection to the customer is very important. Yeah. Customer get irritated if they get bot replies. Yeah, they have like different kind of question. You know, people have different kind of question. Right. Can this be done? Can this be done? Yeah. Bot cannot reply each and every To each and solution. everything, Yeah. right. So now we provide like Monday to Saturday. And Sundays are off, but still we get like complaints like we are not getting good replies and all that. But we believe that our employees also deserve a day off like everybody else मतलब do. people should understand that. Yeah. मतलब we are working day and night for them. उसके बाद भी let's say it's the new year. Next day they start texting you are guys scam, you don't reply, you guys are fake. मतलब I don't understand what is the issue in Maybe because they expect the same level of you know, Myntra, Nykaa, yeah. So they have that mindset because they shop 70%, you could say. They shop 70% from these brands. Which bigger are made up, built up from years and years, funded like heavily. Absolutely. But they should not expect from us until we become one of those. I think you are on the journey of becoming one Yeah, of those of course. big brands. And Hopefully. मेरे को ऐसा लगता है कि bot मतलब you can have a bot also and also a person who can reply. Yeah, but ताकि it does like I tried the same thing, but it did not work for us. ताकि पेशेंट रहे. आई थिंक सर्टेनिटी दे दो ना किसी भी कस्टमर को तो वो थोड़ा शांत रहता है. नहीं, वो तो ऑफ कोर्स होता है, बट अगर आप उसका दूसरे क्वेश्चन का भी जवाब नहीं दोगे तब भी वो उतना ही but फायर it होगा. depends on the customer to people who are customer, shopping every day, they also know that the bot is replying, right? Yeah. So Yeah, what is they the also point of involvement of that? अगर वो आपको एक मैसेज रिप्लाई कर भी रहा है, नेक्स्ट नहीं भी कर पाएगा, तब भी आप impatient हो गई. There is no point of involving him. Just suppose like after 7 my bot replies that my agents are not available, blah blah blah, ठीक है, तो उसके बाद भी जिसको अर्जेंट रहेगा वो तो 10 मैसेज करेगा ही, वो कॉल भी It करेगा. also depends on customer to customer कौन कैसे react कर रहा है, and every human is different only, so you can't cater to everybody. Yeah. That you can absolutely not do it. I think a lot of insightful conversation we had. I think I got to learn about a lot of things. Let's come to that influencer question. I think
एंड there's also मैन्युफैक्चरिंग का क्वेश्चन है जो मुझे पूछना है कि हाउ डू यू मैन्युफैक्चर योर फैब्रिक्स, हाउ डू यू गेट इट, एंड अगर कोई स्मॉल स्केल बिजनेस अभी शुरू कर रहा है तो उसको कहीं से फैब्रिक उठाना चाहिए, खुद बनवाना चाहिए, रॉ मटेरियल्स कहीं से लेना चाहिए, लाइक हाउ शुड दे गो अबाउट द फैब्रिक? लेट्स गो विद द फैब्रिक क्वेश्चन। फैब्रिक सी, अगर बहुत ही स्मॉल बिजनेस है, दे वांट टू गेट बूटस्ट्रैप, दे डोंट वांट टू टेक अप इन्वेंटरी व्हिच वी सजेस्टेड, इवन इफ यू हैव फंड्स, ट्राई टू पुट 10% ऑन इट एंड देन टू इट। तो मैं यही बोलूंगी फैब्रिक, ऑफ कोर्स टेक फैब्रिक, बट फैब्रिक में भी ये होता है ना, इफ यू गो इनटू द मार्केट एंड any market, I will not reveal the market name of course, but if you But go you to can if you want. no, I don't want to. So you can go to the market and just say okay, मेरे को ये पसंद आ गया, you started sampling in it. So people come to the real deal when the basically जब उसका आपका sales जब होने लग जाएगा and you get to know, get back to that vendor, get me the same fabric because I have orders now. हाँ, You'll never get it. There is only 10% of chance कि वो fabric of course बचा हुआ होगा. Why? क्योंकि you deal with, when you have small budget, so you will not, of course, the wholesaler will not entertain you to take 20 meters. अच्छा, हाँ, ठीक है? They will not entertain you. You either have to take like at least like 2000 something meter हाँ. to get your own production done. Right, But of course, if you're starting with a bootstrap budget, तो आप क्या करोगे? आपको कुछ पता ही नहीं तो आप क्या करोगे? आप सबसे पहले जाओगे मार्केट से कपड़ा उठा के लाओगे and you'll stitch the samples. तो ये हमारे साथ भी हुआ था, हमने बहुत सारे डिजाइन निकाले, 1 महीना 2 महीना बेचा, उसके बाद चला कि माय वेंडर इज जस्ट हैंड्स अप, आई डोंट हैव इट। तो तब मुझे लगा ओ शिट, वी आर गोइंग ऑन अ वेरी रॉन्ग पाथ। फर्स्ट यू गॉट टू डू कि आप या तो बैकअप में उठा लो, ठीक है, यू डोंट हैव फंड्स कि आप पहले एक ही प्रिंट का या एक ही टाइप के फैब्रिक का आप 2000 मीटर कर पाओ, दैट इज अ वेरी बिग अमाउंट फॉर एनी ब्रांड हु इज स्टार्टिंग अप, दैट फॉर वन स्टाइल, राइट। सो यू एटलीस्ट यू हैव टू डू 20 स्टाइल्स। तो वहां पे स्टाइल का भी तो पता नहीं है अभी, स्टाइल का भी पता नहीं है, सो आप उठा लो, आप देखो, बट बैकअप में आप उसकी तैयारी करो कि कहाँ से ले सकते हो। अच्छा। अगर वो बंदा नहीं दे पाएगा तो Okay. सबसे पहले तो ये सबसे पहले फैब्रिक का तो आपका प्रो एंड कॉन्स ये इस तरीके से आपको करना चाहिए कि अगर आप यहाँ से उठा रहे हो तो आप बैकअप उसका बना के चलो, 4 लोगों से सैम्पलिंग करा के चलो फैब्रिक की भी। ठीक है। कम इन टू द फैब्रिकेटर पार्ट, आई बिलीव आप शुरुआत कर रहे हो तो ऑफकोर्स टेक अ मास्टर, लाइक बिल्ड अ सैम्पल ऑन योर ओन, जहाँ अपने आग के सैंपल सिलवाओ, नॉट जस्ट टू गिव इट टू एनी काइंड ऑफ एजेंसी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो आपका पर्सनल लुकआउट इनपुट नहीं हो सकता। आपको मे बी वो ऐसा चाहिए था लेकिन बन के आ जाएगा, आपको भी उतना है नहीं, मतलब इतना नॉलेज नहीं है, तो फिर आप अपना पर्सनल टच नहीं दे पाओगे इस चीज में, यू विल नॉट बी एबल टू यू ट्राई फिटिंग्स ऑन यू, देन यू रियलाइज अच्छा इतना लेंथ नहीं, इतना रिक्वायर्ड है, इतना ये नहीं, मतलब कुड बी एनीथिंग। सो फर्स्ट आई थिंक कि आपको खुद से पहला सैंपल तो खुद से ही करना चाहिए, कीप इट इन योर विजन कि आपको क्या करना है। आफ्टर दैट कंपनी बड़ी होती है तो ऑफ कोर्स ट्राई टू गिव इट टू अदर पीपल टू यू डू दिस सैंपल, यू डू दिस सैंपल, और maybe you can make your sample. But I think you're also speaking from a fashion stylist vision, like you have done a NIFT course, right? So but अगर किसी को क्लोथिंग बिजनेस करना है लेकिन उसके अंदर वो डिजाइनिंग एस्थेटिक्स भी नहीं है, देन वो क्या करेगा? उस केस में क्या करना चाहिए? See, research is the base part of any kind of designing. आप रिसर्च आपका तगड़ा है तो ही आप कुछ कर सकते हो, मतलब it's not about copying what's in the market. Right. Everything is inspiration in fashion. हाँ. So if you see other big brands doing it, you maybe cut down like, okay, this is the nicest thing that I'm seeing and it's trendy, and how you can come up with your ideation and थोड़ा सा differ करके. what fabrics you're gonna put, it all takes, you can't just take it and chapo, it's not possible. People say it कि अच्छा it's very easy, design देख के करना ही तो है, क्या extra effort क्या लगता है, but बहुत extra effort लगता है, it takes a lot. Do you think that's ethical कि मतलब कहीं और से कपड़े लो, या इसको भी वाइट लेबलिंग ही बोलते होंगे शायद, if I'm मतलब कहीं और से कपड़े लो एंड फिर आप अपना बस ब्रांड नेम डाल करके, that's white labeling, no? That is like sample उठाओ कपड़े में। Why does it sound very scammy to me, or why does it sound very मतलब गलत to me? I don't know. White labeling. हाँ, What I- but it's normal, no? Like it's ethical. If it is acceptable in the market, then it is okay. No, I'm asking you. I don't know. It is ethical, yeah. Ethical. It's nothing about bad thing, because the person who is selling their design, it's But from the first step you are white labeling, so the customer also knows. Exactly. मतलब the niche stands out of always, समझ रहे हो बात? अगर आप कोई ब्रांड किसी नीच से बना रहे हो ना, वो स्टैंड आउट कर जाएगा। लेकिन अगर कोई ब्रांड आप व्हाइट लेबलिंग से करा रहे हो तो कस्टमर को पता चल जाएगा कि दिस ब्रांड हैज टू गो इन दिस वे,
For example, mostly white label brands go into everyday wears. बट मोको बारा का भी तो पता नहीं चला, वो तो न्यूज में आया, रील्स में इन्फ्लुएंसर लोग क्योंकि उन्होंने बनाने अपने लगे. टाइप ऑफ प्रोडक्ट पे काम किया, अपने कलर थ्योरी पे काम किया, दे पुट देयर ओन एफर्ट इन सैम्पलिंग, राइट? Maybe Shreya white being the user, fan speaking. maybe Mokobra is doing white labeling, but what they are bringing into Indian market is something new. Yeah. So कहीं ना कहीं एक USP है. Yes. Yeah. मतलब maybe they are charging 1,000-1,500 rupees more into the product, but they have a some different something quality to into it. And वो market मतलब whenever the Mokobra is kept there, वो दिख जाता है कि the wheel balance, the quality of wheels they use, the lightweight of the material. Maybe they are white labeling from China. India में तो नहीं है. ठीक है. बट व्हाइट लेबलिंग मुझे ऐसा लगता है ना कि व्हाइट लेबलिंग जहाँ पे बोल रहे हो, हाँ. तो व्हाइट लेबल भी देयर सम काइंड ऑफ होलसेलर हु इज सेलिंग इट, तो वो आपको सेल कर रहा है तो 4 को और सेल कर रहा है. हाँ. तो यू विल नॉट बी हैविंग योर ओन यूनिकनेस Identity. अनटिल आप उनसे बोलो कि अच्छा योर प्रोडक्ट इज दिस, मेरा बस ये कर दो, तो मे बी देन यू कैन स्टैंड आउट. अदरवाइज व्हाइट लेबलिंग इज गोइंग टू बी that is रेगुलर थिंग. MOU based white labeling. Okay. So that is also legal into this market. What you do ना कि आप किसी से व्हाइट लेबलिंग करते हो और आप उससे MOU साइन करते हो कि अगले 5 साल तक ये प्रोडक्ट कहीं और गया तो उसके ऊपर केस हो जाएगा. अच्छा. So they agree into it. मतलब this is also legal and ethical. डिपेंड्स टू हाँ. होलसेल, बहुत सारे होलसेलर नहीं करते कि नहीं देखिए आप लोगे तो आपके ऐसे 10 और लेने हाँ, वाले. या तो फिर आप ज्यादा बल्क में लो. Yes, yes. है ना, फिर अगर. Okay, got your point. So as I was asking you about the influencer. Influencer marketing, I believe, is really important. Really important. I mean, if brand there is existing, then they have to do influencer marketing. Yeah. Doesn't matter you do paid, doesn't matter you do barter, doesn't matter you do something on the other sourcing or anything. Yeah. Just try and put a department where one person is constantly following up with bloggers, influencers. If they want to try a product, give a review, keep it UGC. If you're a small brand, try to connect with the people who have also started Right. their content journey, so they can relate and give you a nice product review that could be useful for you. Or else there is a different kind of collaborations that many brands are doing, but customer doesn't know like Right. how do they connect. So I'll tell you, sourcing is a part that every brand should know. Okay. Even they are small, that there are stylists, like every actress and actors have stylists. हाँ. They have like 5 bunch of people who work under Right. them. So what they do is they basically give ki I have this kind of event, and you reach out to brands who are famous and everything. Their products is likable according to the event, so they reach out to us and we source them to the products. Okay. So that's how sourcing industry works as well. And that's a very efficient way of, I think, promoting your brand as well. For the brands who doesn't have lots of funding, Yeah. and they also want to reach out to A bigger lot of people, audience. to celebrities, it's a very nice way. If you can really put up a person who can have a good connection with stylist. Yeah. Yeah. Because I saw that on Wabi Sabi a lot, that celebrities were wearing Wabi Sabi clothing, and I was also very astonished and happy for you. I was also sharing reels with you कि भाई इसने पहन रखा है Wabi Sabi का कपड़ा. So how do you like उनसे आप लोग ने उनसे बात की वही So outsourcing? basically, it's mostly they reach us, because if we reach them, they don't reply, because they only reach when they have a requirement. Okay. So if they have a requirement, they pitch Wabi Sabi, this is a requirement and something like that, and we try to deliver what they want from us. Okay. And that's how it works. So it's mostly like if you're sending like maybe 20 sourcing, it is possible you might not get any in return. And It's कभी possible. कभार मिल भी सकते हैं. कभी कभार मिल भी सकता है, कभी कभार आपके बहुत अच्छे सेलिब्रिटी और फेवरेट सेलिब्रिटी कुड वेयर. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन like how frequently you do it. Can I Because it's all about luck. Can I ask how much it charges, if you're comfortable sharing it? It's Approximately, if you can tell me. I can't tell that on camera. Okay, let's keep it. I think You can connect to PR people. yeah, and They'll tell you figure how out much a celebrity approximately charges. जितना भी होगा वो you can connect with an agency Yeah, and get yeah. to know that.
Okay. How many celebrities have worn Wabi Sabi till now? If you can share that with us. See, celebrity have different kind of categories also. There are big celebrities, then there are TV serial Any celebrities. celebrity for that matter. I don't right now. I don't have the count, but Yeah. maybe more than 20 to 25 Oh, celebrities have. I mean that's great, yeah. Yeah. And organically वो काफी ज़्यादा grow भी किया Yeah, है. it matters a lot to the brand because people who follow those celebrity and they see Wabi Sabi, so the people who follow us also, they get very happy. Oh my God, you guys are growing Yeah. and glowing. हाँ. So उनको देख के भी अच्छा लगता है और that's a symbol of status. Yeah. That you. your और brand is- motivation आता है यार, तुम लोगों को भी काफी motivation आता होगा when you see somebody Yeah, wearing of your course. brand. तो okay, my last question and I will leave you guys. You can go. Is sustainability की ना चीजें आजकल बहुत ज़्यादा popular हो रही हैं. Like in every field, in every department, sustainability is one big thing that is coming up. So what do you think about sustainability in fashion, and how do you think that it will scale in the coming 5 to 10 years? See, I think sustainability is something that if a brand choose to do then only it's a thing. Like we do not cater sustainability right now. What we do as a sustainability part is that we cut down our inventory. We do not use extra fabric. We do not waste fabric. We do not we try to cut down our usage of wastage. And we try to do something that reduce the environmental waste. That's what we do about sustainability. But Yeah. there are other brands in the market who particularly do something like resource such fabric. They do such kind of marketing. So since I am not from that category, I do not belong from that. So I don't have much knowledge that Yeah. is it like a thing to So do. we have never been a seller of sustainability, neither we have been a buyer of sustainability. Okay. So it's a healthy relation between them. Yeah. Ki what they're building across them, they have a different community to sell it. Yeah. So we are actually no one to judge it. But what do you think about scaling it? Do you think that this market is going to scale up in 5 to 10 Definitely, years? yes. Definitely. Okay. If a luxury brand can do, like they are, of course, they are not giving you exactly what they are selling for 80k, and you are still accepting it. Yeah. People are accepting it, right? So why not sustainability? I think sustainability is also about high pricing. I don't know whether you guys agree or not. Like it can. What do you guys It think? can be a thing, but since we are not even a Into consumer it, of a sustainability, so we don't even go on that, track to at least see what sustainable brands are doing right now. We like dream, of course, to one day Yeah. we can also become something like this. Yeah. But yeah, I totally support that fact that people are doing sustainable. You don't have any remarks to say. So another question will be for you only. Okay. What is the revenue of Wabi Sabi? If you can disclose it. Yeah, revenue of Wabi Sabi is actually variable. Matlab, it depends upon the month to month. For example, in a festive season, we clock around a CR every month. Okay. And in low seasons, we clock around 70 to 80 lakh rupees a month. And how much do you save after everything? So net profits come to approximately 7.5%. Okay. तो So- मतलब साल का 50-60 लाख रुपए बन जाता है. तो अगर किसी अभी कोई छोटा सा अगर वो शुरू करे, वो कितना मार्केटिंग बजट लगाए और वो कितना प्रॉफिट गेन कर सकता है? या प्रॉफिट तो अभी पॉइंट ऑफ व्यू बनता नहीं है स्टार्टिंग में. स्टार्टिंग में कोई प्रॉफिट नहीं है. होना ही नहीं चाहिए, मतलब इससे देयर शुड बी नो कंसिडरेशन ऑफ प्रॉफिट. ओके. If whether you are earning or not earning, that should not bring any change to your lifestyle or anything. राइट. Your But that dedication money also. should be into that money. आप whether you have a good lifestyle, bad lifestyle, that is separately part of you. Whatever you spend, whatever you earn, you have to put back until it becomes so huge कि उसमें से आप 10% भी निकालो तो फील पता ना चले. राइट. एज यू सेड कि 3 साल भूल जाओ. हाँ, 3 साल कोई प्रॉफिट ही नहीं है. कुछ भी नहीं है. मतलब वो Mind, body, बुक्स soul. में बहुत ज्यादा होगा. कंपनी के करंट अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसे होंगे. But that money is not yours actually. Your money. Okay, any closing statements that you guys want to give to the audience? Closing statement is that lage raho, do your best. Yeah. What you can do, the most of the time of yours you can give is to your business. Because any day it will gonna work. Yeah. So that's Just have to put what- the hard work and labor into But it. beyond calculating the returns, beyond calculating Yeah. the मतलब rise in your lifestyle कि क्या होगा नहीं होगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मैं ये गाड़ी कर लूंगा, मैं ये घर खरीद लूंगा, मैं ट्रैवल कर लूंगा.
दुनिया में सब बात की बात है, मतलब वो सब चीजें आपके लिए एक पॉइंट ऑफ व्यू बहुत छोटी हो जानी चाहिए, तो बस आप लगे रहो, करते रहो काम बस। Yeah, and I think that's how you can grow. So I'm glad that तुम दोनों आए, मतलब काफी ज़्यादा टाइम से I think I've been asking you guys to come up and discuss and maybe help other people to understand कि एक fashion clothing brand कैसे बनाते हैं, because I think you guys have done it. Give your introduction and tell us about yourself. So I think Harshit will start about his introduction first, what he do and So everything. hi, my name is Harshit Mitra. I'm the co-founder of the brand Wabi Sabi. So I'm the strength and finance background of the brand. So I handle the marketing, finance, and supply chain of the brand. And here I am. Hi, I'm Shreya. And I basically look over all the look and face of the brand. Like what you see, whether it's like designing the product, the website, PR, collaborations, everything my you God. see is what I handle. And whatever strength, strategies, and everything that you see, he handles. Okay, I mean that's quite a nice division of things. How did you guys start up? वो सब बताओ, शुरुआत कैसे की थी? हमेशा कीड़ा था एक एंटरप्रेन्योर बनने का, या फैशन इंडस्ट्री में इंटरेस्ट था? He had the Kira. I Okay. was a normal fashion person, normal fashion student. I was not something like I had a Kira ki I had to do some entrepreneurial shit or something like that. But he had. So he'll tell. So यार हाँ कीड़ा तो था यार, मतलब स्टार्टेड अराउंड 19, फिर मैं कहूँगा कि बहुत छोटे रूम से स्टार्ट किया था, फिर लगेगा नहीं यार वो सारे फाउंडर्स जैसे स्टोरी बिल्ड हो रही है, क्या छोटे रूम से स्टार्ट किया आज किया, बट अगर मैं टाइम लेके सच में बताना शुरू करूंगा अभी तो सच में पता चलेगा कि हमने बहुत छोटे रूम से स्टार्ट किया। Maybe that's how everybody starts up. Yeah, matlab, it's like every other brand. You may be taking interview in the next few episodes. They will tell you that they started in 2020 and एक room से start किया, but that's our reality as well. But Harshit said that 2019 में शुरुआत की तुम लोग ने। No, like 2019 we started figuring out अच्छा, if we want to do not, Acha. like figuring out what name we should name our brand and researching a little bit researching a little bit about niche, Okay. what we have to do, finding out the gap in the market. When he did all his like studies and after that he did a little bit of job also for a period of 6 months. अच्छा जॉब किया है तुमने? Yeah. So I was doing internships and he was doing a little bit of job just to justify that you have done your graduation. Achha. ठीक है? So he did that and after that he went back because COVID, there were news that COVID is going to come and everything gonna locked up. So he went to Allahabad to support his family and be with the family. So he went there and like after COVID, like I believe ki 2020 mein everyone have realized what they need or should have been doing. Okay. So that is the point we realized and Okay. we are figuring out like in the COVID कितना बात करोगे आप, बात करने के बाद भी बहुत सारा टाइम बचता था, तो उसमें we started thinking like why not to do something productive. Okay. And you were into fashion, so you guys collaborated. Related, Even yeah. in the college time, like all our other friends were chilling and just chilling. We used to do something out of it. We used to do like productive thing. So again we like वैसी उसी तरह से चले and then we started talking about कि अच्छा कुछ करते So हैं. that was the phase, मतलब इतनी clarity नहीं थी कि that we want to do such big things और ऐसा कुछ, but ये था कि नहीं यार, rather than playing PUBG and doing nothing, we should do something productive. So we considered it as a project. We sat on it together, did video calls, started doing planning कि नहीं, what is the gap in the market, we have to find it, then we have to place the products according to the pricing. So we were doing it that only for a year or so. Okay, and none of you are from the marketing background as well. No. But he basically learned, like I was from a fashion background, still what you get learned in a college or education, any kind of education. So it's not like मैंने भी कुछ बहुत ज़्यादा सीख नहीं रखा था. It's just that theory, all fashion theory and everything. There is nothing specific about like मैंने रियल टाइम एक्सपीरियंस फैशन को नहीं किया था, जो किया था इंटर्नशिप में, वो भी बहुत ही कम. लाइक आई डिडंट गेट मोर ऑफ नॉलेज की करना क्या है. तो सिमिलरली ही हैड आल्सो लाइक ही लिटिल बिट लाइक डिड अ लिटिल बिट ऑफ रिसर्च ऑन हाउ टू डू मार्केटिंग. It all started when we started doing. यार एक इंजीनियर को कीड़ा नहीं होता कि मेरे को ये भी जानना है, मेरे को ये भी जानना है, तो मार्केटिंग में वैसे कीड़ा का टाइम थी उस टाइम कि अब ये खोल लेते हैं, ये देखते हैं, ट्राई करके क्या होता है, इससे क्या होता है, तो धीरे धीरे करके ट्राई करके क्यूरियोसिटी था तुम दोनों के अंदर बहुत ज्यादा कि भाई कोशिश करके तो देखते हैं ये होता क्या है. None of you knew had an idea about कि how this is gonna pan out. So we never had an idea. So when she designed her first product, I remember it was
दिसंबर 2020, तो मैंने इसको बोला यार प्रोडक्ट तो बना लिया, अब ऐड चला के देखते हैं। हाँ मतलब एक्चुअल में किसी ने पता कैसे ऐड चलाया, तो मेरे को याद है कि उस दिन मैंने 83 रुपीज कुछ की एक ऐड चलाई थी। Oh. तो करते 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 फिर वो बिल्ड होता गया। So basically, starting was something like, first we got some, fabrics. Yeah. We took a leap कि आज करना क्या है fabric के बाद. उसके बाद we made up like 10 samples, 20 samples. When I made the sample, I realized, okay, product में कुछ तो बात है. Let's like market it. Then we did a shoot. Again, it was our first shoot. Yeah. जैसा expect किया था वैसा बिल्कुल भी नहीं हो पाया. So I was just thinking कि ये shoot वैसा निकलेगा कि नहीं निकलेगा जैसा मुझे actual में market करना है. So what I did was I basically did not never uploaded that shoot because I was not feeling my product. Yeah. So what I did that I picked up an iPhone, called a model at my home only, fixed up a backdrop, and I got it shot myself. Okay. And after that we uploaded that product, people had that, okay, this is something new, because what we started with, we did not start with the basic chords. Okay. We started with shrug sets. हाँ. So उसको देख के लोगों को लगा थोड़ा okay, unique this था is उस something time. That point of unique. view Then also we it was very realized, new to the okay, market. okay, people need unique. Obviously that's how you're gonna stand out ना. इतने ads देख रहे हैं आजकल लोग, और कैसे तुम लोग stand out करोगे. So how did you decided on the niche कि मैं affordable luxury clothing बनाऊंगी, मतलब ये किसने decide किया था? और ये how did यार you? so what happened, no, she designed the products. हाँ. So I was doing the calculation and everything. तो मतलब उस टाइम ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी, तो I was keeping the products for around 2,000, 2,500, 3,000 rupees. मेरी कॉस्टिंग प्रोडक्ट ऐसे बैठ ही रहा था. Then I started doing some data analysis into it. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि यार जो जितने casuals and everyday brands है ना, they lie in a category of 999 to 1,999. And जितने premium labels हैं, they start from 9,000 to 1,000, 10,000 rupees. तब मेरे को realize हुआ कि नहीं यार ये तो बहुत बड़ा huge gap है. So if मतलब the products we are making is like premium luxury only. Right. But if I'll place the price in 3,000 to 4,000 rupees and I cater that products to the mass media, I'll make great margins into it. Right. तो हमने स्टार्ट किया इसको 2,500-3,000 में प्लेस करना. फिर करते 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 वो नीश हमारी 2,000 से 4,000 ही बन गई. So मतलब तुमने वो देखा कि गैप कहाँ पर है, मतलब लग्जरी फैशन इतना ज्यादा एक्सपेंसिव है, और फिर तुम्हें लगा कि अफोर्डेबल इज लाइक चीप मटेरियल. हाँ. So you like You cannot call it cheap. Like I would not tell कि other brands who are doing it in like 900 to maybe 1,900. They are not also cheap, but they have a category of Mass looking audience. it basic. Yeah. And when you go to a brand like a label or sort of something, they have like good products, good product that you want. Like I should be having one in my wardrobe. So अगर कोई अफोर्ड नहीं करता तो वहां नहीं जा सकता, और जो लोग अफोर्ड करते हैं उनको बेसिक पहनना पड़ता है. देयर हैव टू बी समथिंग इन द मिडिल, राइट? सो दैट्स व्हाट वी क्रिएटेड एंड दैट्स हाउ वी फाउंड आवर निश. and I think that's an absolute banger. I mean सही गैप ढूंढा तुम लोग ने, because that's I think something अभी भी जिसका प्रॉब्लम, मतलब मैं खुद भी अगर देखती हूँ कुछ ज्यादा ही लग्जरी मतलब नॉर्मल लेबल्स का देखा और देख रही हूँ कि 15-20 हजार का एक शर्ट है, and I'm like shit, but I wanted that, it's unique. And I think Wabi Sabi is doing something like that. Yeah. You are creating a lot of different styles out there which are not available everywhere. So I think that's how you're standing out. Thank you so much for coming to my podcast, believing in me and giving me the chance to talk to you guys. I know it's the first podcast that you guys are shooting as well. So thank you for that also. Yeah. Thank you so much. So I hope you liked it. Until then, we'll see you in the next one.